Welcome back to Grey Beyond Narrative channel, where we investigate the world's complex and nuanced realities. Today, we will look at one of the most heinous and tragic events in recent history, the 26th November Mumbai attack. These November 2008 attacks were a series of coordinated shooting and bombing attacks carried out by 10 terrorists who targeted multiple locations in India. Specifically, Mumbai, India's financial entertainment capital. The attack lasted 4 days, killed 166 people, and injured over 300 others. That shook the world. According to Indian authorities' claim, 10 members of Lashkar-e-Taiba, militant Islamist organization for Pakistan, carried out these attacks. The attack also had far-reaching implications for India's security, diplomacy, and economy, as well as many questions about Pakistan's role, the investigation, and the international response. We will attempt to answer some of these questions during the live session using the facts and sources that we have gathered. We will also welcome your comments and questions and will attempt to engage in a constructive and respectful dialogue. So stay tuned. And I'm going to move forward to Shaji. Shaji? Shaji, I think your mic is muted. Am I audible now? Can you guys Yes, hear me? yes, you're audible. Yeah. So I Yes, was yes. basically saying I'm just going to be very quick and give a few nuances which are related in and around this subject. There are three layers to this, where Indian government and Indian authorities have claimed that Pakistan and the Pakistani state directly carried this out. The second aspect is that the Pakistani state has never acknowledged this and they deny that they basically had any hand in this. And the third aspect is that this was basically carried out by a group of militias who, by certain countries, were later designated those organizations they were associated with as terrorist organizations. One of the culprits who was caught in regards to this, Mr. Kazab, if you look at him again, the entire trial and stuff was very much highlighted, and there were even various opinions in terms of if he should be assassinated or he should not. Sorry, if he should be hanged or not hanged, or given capital punishment or not, even within the Indian media and the celebrity circles within India. So we're going to open this conversation up. No doubt, it was a sad occasion. It was a terror attack, and nobody should be condoning the terror attack, a terror attack of any kind. I'm going to quickly move to Aditya. Aditya, go ahead. What's your basic opinion in regards to that? So my initial thoughts about 2611 is that it wasn't as big as the 9/11 of America, which killed almost 3,000 people. But some people will argue that it was in effect was India's 9/11 moment. Uh, though 166 people died, but the way it was carried out and the horrors and the method and the killing spree of the terrorist was very convincing to the people that it wasn't just a way to kill people but also to show the terror and the audacity of this group to tell the state of India that uh, what all we can do and what all we can infiltrate on India. And the worst part is that it continued for 4 days. The horrors and the killings continued for 4 days. It wasn't like a single one shot uh,
attack which killed uh, people, and it was over. These horrors continued for 4 days. People were dying for 4 days straight. There was a fight which Indian state was fighting with these people with coordinations, and it continued for 4 days. And it was broadcasted, like, the visuals were broadcasted on live television, on all the news channels in India. It was like almost all the country came to a standstill. Everyone was on TV watching, covering these uh, attacks live. So it was a kind of awakening moment for India, where India realized that, this is something which is a kind of revenge, or a message being tried to be conveyed by the terrorist to the state of India. And we can further discuss that, what were the implication of it and how did people view it. But these are my initial thoughts about the attacks. Okay, thank you very much. Just to basically question a bit further, like when this happened, what was the initial thought instantly that it's Pakistan who's carried it out? What was the general consensus? Yes, it was like, I think I was very young at that moment. In 2008 I was probably 17 years old. I wasn't someone who was any much, like, anyhow interested in any kind of politics or, like, geopolitics. I was probably in my high school, like, I was thinking about all the things in life, and, like, friends, and probably doing my own things. So I wasn't very attached to, like, any kind of politics, even, like, national or international politics. We had, like, of course we knew about Pakistan and India's conflicts and issues with Pakistan in the 70 year or 60 at that moment, 55 years of long history of since independence. But of course, like, we never had any, just like Pakistanis, we never had any, like, very positive views about Pakistan. We knew that, Pakistan is a enemy neighbor, and we don't like Pakistan. But I knew that, there were efforts made by the Indian state, or we can say by even by the Pakistani state, to uh, like, calm the tension down and try to somehow negotiate a peace deal. So like, since I remember, we have always tried to, except, like, brief moments in, like, history, we have always tried to, both the sides, like, I wouldn't still try to, like, blame which side was at the fault. But, like, our leaders from both the sides since the very beginning have always tried to, like, mend our differences and come to somehow at least like, some kind of peace deal with each other, which hasn't happened yet or till date. But my initial views were, or, like, the people around me was, why would, like, since I have established that, it was pretty clear to the Indians that it's the Pakistani state who has sponsored it, like, at least that's what was told to us. So, like, at least to the Indians it was pretty clear that it's been carried out by somebody from Pakistan. If the state is not directly involved, it has some of the elements which are involved in it. Maybe a terrorist group which is involved in it, directly or indirectly. So people were, like, just shocked that, why would, like, a state would try to harm India's, like, regular civilians. Like, people couldn't comprehend these attacks. It was very shocking, and to a average Indian, it was always taught, like, to every society, it's always said that, we are always the victim. I don't think any country tries to portray that, we are the oppressors or we are the infiltrators also. So to the Indians, it was always about, Pakistanis have always attacked India. India has always been the, like, the side which has taken all the fightings from Pakistan, and India is the, like, nicer guy in this war, and Pakistan is a rogue nation which is always trying to harm its neighbor.
they don't like India. So these were like, my initial thoughts at that time growing up. As long, like, all that I can remember from that time, it's not much that I remember what exactly happened. I was 16, but it was kind of a shock that, looking at the visuals and these terrorists who were attacking, that, how could they and why would they. So these were my uh, thoughts at that time, from what I remember. Mm. Thank you very much. So next, I'm going to move to Sid, and feel free, Aditya, when you have to say something. I think we're going to have a more kind of a conversation than going in turns. So, what are your initial thoughts so we can open this up for conversation, Sid, and then we'll move to Furkan and obviously Maha. When Thank you for the time, Shaji. Whenever I'm thinking about Mumbai attacks, I always try to look at it from a little bit of a grander view. मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई स्टेट या लेट अस सपोज कि स्टेट जो सी है वो इसके इन्वॉल्व है व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ देम जिस अगर कोई भी अटैक होता है जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर इंडिया बलूचिस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसीज करता है तो देयर इज अ मोटिव बिहाइंड इट तो खालिस्तान वाला सारे मामले हुए हैं देयर इज अ क्लियर मोटिव बिहाइंड इट इट मेक्स सेंस कश्मीर में जो कुछ होता है देयर इज अ क्लियर मोटिव बिहाइंड इट it makes sense it makes no sense for the Pakistani states or terrorist organizations to conduct any such actions in Mumbai. मुझसे वो डॉट्स कनेक्ट आज तक नहीं हुए पाकिस्तानी स्टेट को इससे क्या फ़ायदा होगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को उससे क्या फ़ायदा होगा जिस वक्त मैं इसको इस चीज़ से व्यू करता हूँ क्योंकि इसका ना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है there is nothing that you can achieve in Mumbai of all places if you're talking about resistance or freedom fighters or whatsoever. Uh, मैं जब इसको इस तरीके से देखता हूँ कि who at the end of it would have gotten something, it I'm sorry but it would point out to the Indian governments. उनको उनके पॉलिटिशियंस के अलावा इसका किसी को भी फायदा होता नहीं है. उसके अलावा वो जो उनसे पुलिस ऑफिसर थे उनका क्या नाम था, काकरे मेरे ख्याल से उनका नाम था, उनकी भी फिर डेथ हो गई है. दैट रेजेस सस्पिशन बट दैट मेक्स नो प्रूफ व्हाटसोएवर. तो कोई प्रूफ इसके सराउंडिंग में उस तरह का कोई आता नहीं है. जहाँ तक बात लोग कहते हैं जी अजमल कसाब फरीदकोट से था एंड व्हाट नॉट, आई डोंट फाइंड द लैंग्वेज सिमिलर, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशंस हैं. मैं इस चीज़ के ऊपर लेके चल रहा हूँ. इसको इस सारे एक्शन का फायदा किसको हुआ होगा, व्हाट वुड एनीबॉडी वुड हैव गेन्ड आउट ऑफ इट. मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के माइंडसेट से सोचने की कोशिश करता हूँ, आई फाइंड नथिंग. मैं पाकिस्तानी स्टेट के माइंडसेट से सोचने की कोशिश करता हूँ, आई फाइंड नथिंग. मेरे जहन के मुताबिक पॉलिटिशियंस के पावर प्ले के अलावा इसके मुझे कोई रीजनिंग समझ में नहीं आती है. डू आई हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ्स? नो. बट दैट्स वेयर आई वुड कि एक इतना हीनियस क्राइम होता है, सिविलियंस को अटैक किया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं. वी बोथ कंट्रीज नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, मगर उनका हमेशा एक एम होता है. हमें पता है बलूचिस्तान के अंदर क्या होता है, हमें पता है कश्मीर के अंदर क्या होता है. इंटीरियर के अंदर ये उस तरीके से जिस वक्त होता है, इट इज मेकिंग नो सेंस. तालिबान ये क्यों करते हैं, उनके पीछे की रीजनिंग हमें पता है. मुंबई के अंदर ये क्यों होता है, उससे गेन क्या होता है, किन लोगों के खिलाफ डर पैदा करवाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट. मेरी
assumption जो सी है वो politicians के ऊपर जाती है. सही है. सो डू यू थिंक दिस इज मोर लाइक जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले ही विदाउट इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनीथिंग पीपल से कि दुश्मन ने कर दिया है. सिमिलर थिंग अफेक्टेड इंडिया इन दिस केस एज वेल वेयर इट वाज ऑलमोस्ट वेरी इजी. ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी एक चीज होगी so that is a huge failure of their own intelligence. India is supposed to be a regionally growing superpower. It is supposed it has global ambitions, and for a security lapse like this to have occurred is not a small deal. So to accept the entire situation in its entirety, अभी हम जो recent एक conflict develop हुआ है जिस पे हमने काफी rooms भी किए हैं. We've streamed, had numerous streams on that as well. Palestine और Israel के अंदर आप देख लो. When Hamas basically went with all those missiles, that was a huge security lapse on the side of the Israeli state. जिसका नेतन्याहू को भी बड़ा कुछ करना पड़ा. So it's easy to just blame it on someone, right? If you're not going to be taking into account what exactly happened, how it happened. उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग सोर्सेस बताते हैं कि जिस तरह those people came from Pakistan, but to associate that with the entirety के ये सारी चीज जो है ये पाकिस्तानी स्टेट ने की है, वो इन्वॉल्वमेंट तब तक ना पाकिस्तानी लोग ना पाकिस्तानी स्टेट एक्सेप्ट कर सकती है जब तक कोई इंटरनेशनल बॉडी ने इस चीज का को वेरीफाई नहीं किया, कोई वर्डिक्ट नहीं पास किया. So I've heard, I've spoken to a lot of Indian friends in recent times as well. Whenever this subject comes up, they're almost like Pakistani accept क्यों नहीं करते. हम अपनी स्टेट का कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जबकि वो इंटरनेशनली साबित ही नहीं है. अगर वो साबित होता, उसका वर्डिक्ट होता, दूसरी चीजें होती तो it would be easy to accept, but I don't see how and why even that expectation is there. This is like asking Russia and United States to basically accept each other's doings. Have they done so till now? They have never. Until something is outrightly proven, नहीं, actually तब तक शाहजी, नहीं हुई कोई. in this particular case it goes a little bit further. एक होता है सिविलियन परसेप्शन. ठीक है, कहीं पे बम फटा है, इंडिया ने किया, नहीं इंडिया ने नहीं किया. अच्छा, किसने किया जी? तालिबान ने किया. तालिबान ने नहीं किया जी. अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, वो जो उनसे सिपाही साहबा ने किया. लेकिन जो इंटेलिजेंसिया होता है, वो जो थोड़े दिमाग वाले लोग होते हैं, वो इस तरीके से इसको नहीं सोचते हैं. बलूचिस्तान में अगर किसी जगह पे अटैक होता है, किन के ऊपर अटैक हुआ है, किस तरीके से अटैक हुआ है, किन दिनों में अटैक हुआ है, उस अटैक के रेमिफिकेशंस क्या हैं, ये देखा जाता है. उससे किस बंदे को किस तरीके से प्रॉफिट होगा, उससे किसको फायदा होगा, ये देखा जाता है. उसके मकासद क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर सोच के बंदा इनिशियल अजम्पशंस लगा बनाता है. सिविलियंस को आप बिल्कुल से पुश डालें इस मामले के अंदर. यहाँ पे बम फटता है, इंडिया ने किया, वहां पे बम फटता है, पाकिस्तान ने किया. सिविलियन सारों को उनका दिमाग इतना ही है. मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, देखें पाकिस्तान, इट वाज 15 और 16 इयर्स अगो, राइट. अब तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है. पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन गोइंग एट दिस गेम फॉर क्वाइट अ व्हाइल. वी नो दिस गेम. उस सारी गेम के अंदर मुंबई अटैक्स फिट नहीं होते हैं शाह जी. पाकिस्तान की स्टेट को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिया के अंदर की जो सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको, किसी को उस अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा किसी भी शेप और फॉर्म में. मैं उसको उस नजरिए से देख रहा हूं. एक तो चीज ये है ना कि जी इंडियन की सिविलियंस कहते हैं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान एक्सेप्ट करे. सिविलियंस यहाँ के भी जो हैं वो दिमाग से पैदल है, वहां के भी दिमाग से पैदल है. दे डोंट मैटर इन इंटेलिजेंट डिस्कशंस. मैटर ये करता है कि आप इस चीज को देखें. जब पाकिस्तान के अंदर कोई बॉम्बिंग होती है, हम कहते हैं कि किस जगह पे हुई है, किन लोगों पे हुई है.
वहां से हम परसेप्शन बिल्ड करते हैं। वो लोग जो उनके पास थोड़ा बहुत दिमाग होता है, आज से 15 साल पहले पाकिस्तान इंडिया जिस गेम के अंदर जो सी गेम्स हम खेल रहे थे, उन गेम्स के अंदर मुंबई अटैक फिट नहीं होते हैं, और थोड़े अरसे बाद ही मेरे ख्याल से सिमिलर टैक्टिक्स यूज करते हुए जोन से कमांडोज जोन से नजर आए थे उनको कैमरे के अंदर, जब हमने देखा जो श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, वेरी सिमिलर टैक्टिक्स। वहां पे तो फिर मैं तो बड़ा क्लियरली कहूंगा, इंडिया एज एन इंडिया की स्टेट को वो अटैक करने का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो हुआ, और वो जो था विजिबल था उस टाइम के ऊपर, जो सी सिचुएशन थी विद आवर क्रिकेट बोर्ड, विद आवर पॉलिटिशियन, जिस तरीके से मुंबई अटैक्स के अंदर जो से टेररिस्ट थे वो जिस तरीके की मूवमेंट कर रहे थे, उनके पास जो आर्मामेंट था, उनकी ऑपरेशन का मेथड जो होता था, जिस तरीके से वो चल रहे थे, वन कैन वेरी इजीली अज्यूम दैट जिस जो श्रीलंका की टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था, आई मीन इट इज नॉट अ वेरी फार फेच्ड आइडिया दैट इंडियन स्टेट वुड हैव अ लॉट ऑफ यू नो टू गेन फ्रॉम दैट अटैक। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की स्टेट को कोई फायदा नहीं होता ना यार मुंबई अटैक्स का, लश्कर तैयबा को कोई फायदा नहीं होता, जमात इस्लामी को कोई फायदा नहीं होता, इंडिया के अंदर जो सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इतनी ज्यादा, उनमें से किसी को फायदा नहीं होता। सिविलियंस को आप छोड़ें, ये देखें कि उसका फायदा किसको हुआ। Acha, if I may, Shaji said, I'll go with the opening statement. I think it was a terror attack, uh, and it was a dark day for Mumbai, जो कि इनका financial hub है इंडिया का. And I think the attack went on for 4 days, as Aditya also rightly pointed out. Or I would say, जिस तरह Sid was describing the attack on Sri Lankan cricket team, and also another attack which happened also in Lahore, जो कि पुलिस एकेडमी पे हुआ था. वेल ट्रेन्ड आपके जब लोग होंगे, वेल इक्विप्ड और वेल प्लान्ड जब एग्जीक्यूशन होगी, आप हमेशा सर्कमस्टांसेस को देख के, आप जिस तरह सिड सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहा था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं. क्योंकि they were not people जो कि we see a pattern especially in the US जहाँ पे school shootings होती हैं, a person just having a gun and then going in and then firing. It's not like that. They were very well trained. They put up a fight for 4 days. तो उसमें कहाँ ट्रेनिंग हुई, प्लानिंग कहाँ हुई, इतना वेल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि it wasn't just the shootings. There were certain bombs also in certain areas in Mumbai जो कि फटे थे और उनसे फिर कैजुअलिटीज हुई थी. तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं. इट्स नॉट लाइक के दे स्टार्टेड पॉइंटिंग अ फिंगर एट पाकिस्तान. द प्रॉब्लम कम्स इन जब भी इस तरह का होता है. दो इंसिडेंट्स एक सिड ने भी आइडेंटिफाई किया था जो कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक था, एंड देन देयर वाज अनदर वन जो कि आपका लाहौर में ही. देयर माइट बी अदर एग्जांपल्स एज वेल अक्रॉस द बॉर्डर दोनों साइड्स पे. बट द प्रॉब्लम इज जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन आती है ना, द अदर साइड वो अपने हाथ खड़े कर देती है, हमने नहीं इन्वॉल्व होना, या हम एविडेंस नहीं देंगे, या हम आपसे कोलैबोरेट नहीं करेंगे इन अ वे व्हिच इज ट्रांसपेरेंट. और ये दोनों साइड्स का मसला है. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, ये दोनों यही करते हैं. और इस वजह से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस दे गो इनकॉन्क्लूसिव ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दे वुड पुट पीपल जिनके नाम आएंगे इन्वेस्टिगेशन में अंडर हाउस अरेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट दे वुड लेट देम गो ऑफ आफ्टर, जब ये सारा जो एक मूवमेंट चलती है या किसी चीज को लाइमलाइट मिलती है, so they let Hafiz Saeed go. But why did they put Hafiz Saeed under house arrest? A, B, जो इन इसके ऊपर केस चल रहा था, उसकी क्या फाइंडिंग्स आई थी जिसकी वजह से he was under house arrest for quite some time. He also went to jail for some time. So it's not just के or then I think we should look at the investigation in a bit more detail. इंडिया की तरफ से क्या एक्यूजेशंस लगी और उनके किस इदारे ने क्या एक्यूजेशंस लगाई, और फिर पाकिस्तान में इस पे क्या चीज हुई. आपके जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, आपकी पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उन्होंने क्या लिखा,
देयर वर सर्टेन जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत ओपनली आके कुछ चीजें कही थी, और अपनी अ, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो कहते हैं, वो करके दे केम अप विद सर्टेन theories और claims, I would say. तो उसमें भी मेरा ख्याल है थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि it's not just about कि India started pointing a finger at Pakistan, or Pakistan started pointing a finger I at would India when these attacks happened. जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखो, किसी को हाउस अरेस्ट करने के तो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है दे वर ट्राइंग टू कवर अप फॉर समथिंग they did not mean to happen. Like, we have so many cases, like, majority वो को लगता है कि Taliban are friends and, everything is in control, but then we realize it's not in control. It was not in our control. Maybe there's a possibility that maybe Pakistan was not involved, and the whatever groups were involved, they somehow worked under Pakistan army and they were not informed what they were going to do. But there are cases where people are not informed, and then there is the terrorism stuff in Pakistan as well. अगर मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि टीटीपी को भी पाकिस्तानी कंट्रोल करता है, तालिबान को भी पाकिस्तानी कंट्रोल करता है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? ट्रेनिंग तो कोई भी दे सकता है। अभी रिसेंटली, अभी मैं नहीं, हाफिज न्यूज़ पढ़ रही थी। एक सेकंड, मैं अभी न्यूज़ पढ़ रही थी। तो वहाँ पे 2 बंदे पकड़े गए हैं। एक पुलिस ऑफिसर था, वन वाज़ अ नॉर्मल गाय। उनको सीरिया में ट्रेनिंग मिली थी। सीरिया से ट्रेनिंग लेकर आए थे। सो आई मीन ट्रेनिंग तो फिर ट्रेन आई डोंट थिंक इट्स जस्ट पाकिस्तान्स नीश फॉर ट्रेनिंग सच पीपल। that's the main point, because नहीं, अगर कोई untrained normal बंदा जाके ये एक्चुअली कर रहा मैं है, हाफिज they सईद के won't पॉइंट पे basically, दरअसल ना थोड़ा सा जी जी सेट मैं एक पॉइंट पेश कर दूं, when they are well trained, well equipped और well planned execution होती है ना किसी भी चीज की, for instance we can look at the main events जो कि जिस तरह लंदन में हुआ, आपका यूएस में हुआ 9/11, एंड देन इसको ले लें, या इवन जो क्रिकेट टीम पे अटैक था, या जो पुलिस के ट्रेनिंग बैरक्स पे अटैक था इन लाहौर, दे वर वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एंड दे वर वेरी वेल equipped. So then it's not a sort of a small organization which is behind the attack, and that factors in. जी सर. हाँ, मैं वो हाफिज सईद वाले क्वेश्चन के ऊपर आंसर करना चाहूंगा। इन द केस ऑफ हाफिज सईद, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन व्हाई somebody like him would be in house arrest. It is a simple matter of policy change. And Pakistan and Pakistani military has had a very drastic policy change, and we all know about it. They know about it. The whole country knows about it. Our policy changed in regards to a lot of organizations, including the Taliban, and these changes happened very drastically. हाफिज सईद का उस इंसिडेंट्स के साथ लिंक होना, आई मीन, ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज नॉट अ कंप्लीट इडियट, यू नो। अगर हाफिज सईद वो अटैक्स करता है, जमात इस्लामी को या लश्कर तैयबा को उससे बेनिफिट क्या होता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम कहते हैं, they are not operated by complete morons. There is a lot of strategy and thought behind it. Every attack has a reason behind it. लश्कर तैयबा को भी कोई फायदा नहीं ना होता। उनका जो मोटो है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके वो अपने बंदे जिस तरीके से रैली करते हैं, जिस कॉज के लिए रैली करते हैं, दैट इज वेरी कश्मीर सेंट्रिक। Sid, you do क्यों realize लश्कर तैयबा that मुंबई? Red Taiba is a dedicated, accepted terrorist organization since 2017 by both the No, it UN, has, United yes, yes, States, yes. European Union, No, it is and clear. Pakistan itself. And No, Pakistan, that's yes. why I'm saying. That's why I'm saying. That is exactly what I'm saying. कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, and in regards to Hafiz Saeed, it can very easily be collaborated to policy changes.
But I would further आप like to add to something else. Like 2017 के अंदर उनको जब terrorist organization label किया गया, that was not directly or due to the fact of the Mumbai attacks at all. That was an entire case in United States. There was a court case which was held where they also mentioned the Mumbai attacks, but they did not implicate that. अगर उस चीज का भी आप legal verdict देखें तो most articles basically make that statement जो उसके against भी बात करते हैं कि it is a complex situation and due to that the verdict has not been passed. Hafiz Said has denied the thing, but it still hasn't been proven in court that Hafiz Said was in any way associated to that, even though it's a terrorist organization. But that's besides the point. The point is that in this incident, it hasn't been proven that it's him. And even though it's a gray area, I can understand that. But on top of that, forget Hafiz Said, the Pakistani state's involvement, like people want to state, has never been proven at all. वो कहाँ से आती है फिर? अगर फॉर एग्जांपल ठीक है, ये तो इस तरह की बात हुई कि कुछ लोग कश्ती के ऊपर बैठ के आए, इसका लॉजिक अक्सर ये दिया जाता है कि कुछ लोग कश्ती पे बैठकर आए और वो मुंबई के अंदर घुस गए। अब वो घुस गए, वहां पे रॉ क्या कर रही थी? तो इतना प्रिसाइज अटैक, इतना वेल प्लान्ड अटैक जो है ना, ये बोला जाता है वो आईएसआई की हेल्प से नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये तो बड़ी, अगर ऑपोजिट स्टोरी बनानी हो तो आराम से बन जाती है। इंडिया की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने अंदर कैसे आने दिया, आने के बाद उन्हें ठहरने भी दिया, उन्हें कम्युनिकेट भी करने दिया, व्हाट वर दे डूइंग? सो आर यू लाइक it absolutely cannot be taken as proof? फिर ठीक है, अगर पाकिस्तानी लोग आपको उस अटैक के अंदर मिले भी, एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक आदित्या's opinion as well, and anyone who wants to add, ठीक है, कि अगर आपने उनको फाइंड आउट कर भी लिया, आपने उनको देख भी लिया कि उनका पाकिस्तान से एसोसिएशन है, हाउ डज दैट लिंक द स्टेट टू दैट एंटायर थिंग? ठीक है, ये तो ऐसी बात हो गई उसामा बिन लादेन सऊदी था, तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि सऊदी अरेबिया को ब्लेम कर देते हैं 9/11 के लिए। दैट क्लियरली डिड नॉट हैपन, राइट? तो ये स्टोरीज बनती हैं, हर साइड के ऊपर कुछ है। दरअसल बात ये है ना कि सऊदी अरेबिया के पास तेल है, हमारे पास तेल नहीं है। अगर हमारे पास से तेल निकल आए तो हमें भी लोग कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इज just another Islamic country. It has nothing to do with terrorism. The acts of individuals cannot be put onto the states. तो बस तेल निकालने की देरी है शाह जी। I mean, like I agree to the notion that जो involvement of the state है that needs to be proven. But again, I would go back to the point कि जब भी both sides of the border पे इस तरह का कोई event होता है, no one basically helps the other to basically see कि आप लाइक इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करते। तो दूसरा मेरा ख्याल है हाफिज सईद पे एक छोटा सा पॉइंट था, इट वाज आल्सो द एफएटीएफ जिसकी वजह से ही वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, क्योंकि 17 में वी वर स्ट्रगलिंग with going on the blacklist, which would have been devastating for Pakistan. Yeah, and I think Aditya, हाँ जी। जी जी प्लीज गो अहेड। क्या बताऊं मैं अब इस पे? Any यार thoughts मुझे नहीं on लगी। the involvement of the state and uh, आपका उस पे क्या ओपिनियन है? जो इंडिया का नैरेटिव है दैट इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड, उसके कुछ इदारे इन्वॉल्व थे, उधर की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच लेटर आफ्टर अ डिकेड ऑलमोस्ट उन्हें एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल किया गया। तो उस पे क्या ओपिनियन है आपका? I think that is the truth. I believe in this narrative.
I can Yes. argue all I want, but doesn't mean I'll convince you. So I don't think there's No, no, any. I No, no. understand. But on what grounds? That's what I'm actually. When we argue that there is no proof, why would Pakistan do it? Why would Hamas attack Israel? There is no. What is the motive behind attacking Israel? There is no. What do you think Yes, there is. Hamas wanted to achieve by attacking Israel? They had a lot to achieve, and they did achieve a lot of things. Have you not seen the resultant? I mean, Like what? Tell me, what that's did they achieve? oh, well, for beginning the international narrative. Secondly, they proved the loopholes in the Israeli army. When all of this is going to be sorted out, we will see the casualty numbers. They have made sure that their attacks after the bombardment, in which the ground troops have been affected, they put it on film. They are building a very huge narrative, and they What show. is I that mean, it is because narrative? I think you have missed out a little bit, but majority of the public throughout the world has changed its perception in regards to Israel after what they have done. Public, not the But that is governments. after Israel killed 16,000 is Palestinians, right? Oh, yeah. I mean, but come on, Hamas had a reason. So The reason so being, Hamas expected Israel to kill the 16,000 reason that the Palestinians. reason that they put no, no, the reason that they put out was the Israelis are doing injustice and oppression to the Palestinians, and we are cornered, and we are Palestinians, and एक वो है ना कहावत है कि सियानी बिल्ली पंजा मारती है वो उनका नैरेटिव ये है कि भाई we have been cornered, we are dying anyways, so we are gonna go out with a bang. They have reasons, they have justifications, though I believe that those are wrong and that was a wrong methodology. लेकिन अगर I आपने think, Sid, you're उनके reading in too आर्गुमेंट को much सुना into only one-sided conversation about what actually भाई happened and what मैं was the उनसे response. आउटराइट डिसएग्री करता हूँ नो मैं हमास से इवन राइट नाउ एंड इवन बिफोर 7th अक्टूबर डिसएग्री ही करता था for a lot of reasons, not just by, oh, it is not even from our own set. मेरे पास रीजनिंग नहीं है कि मैं उनकी सपोर्ट करूं, लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि उन लोगों ने अपने नैरेटिव बनाने के अंदर कामयाब नहीं हुए और या फिर उनके पास कोई रीजनिंग नहीं थी या फिर ये कोई एक बिल्कुल ब्लाइंड साइडेड अटैक था, आप हमास के माइंडसेट से सोचिए ना. सपोज दैट यू आर द लीडर ऑफ हमास, आप उसके माइंडसेट से सोचिए. ही हैज अ रीजनिंग, ही हैज समथिंग टू अचीव. मुंबई अटैक्स करके नहीं, वो क्या पाकिस्तान रीजनिंग थी, स्टेट कुछ क्या अचीव अचीव पॉसिबली करना नहीं कर चाहते थे? सकती. टेल मी ना, Sid, what do I you think I think think you... Aditya, if you can explain a bit more about the statement you made. Said Abhi interject करूँ. I think we need to hear what Aditya has to say, and then we Yeah. need to also try to understand वो basically why he's saying that. Please, Aditya. देखें फुरकान भाई, सेड सेड देखें, आप एक चीज समझें. पहला पॉइंट, जो हमास ने जो किया ना, उसका एक ही मोटिव था, टू सेंड आउट अ मैसेज कि हम ये कर सकते हैं, और हम ये अटैक तब तक करेंगे आपके ऊपर जब तक जो है हमारा जो भी मोटिव उनका है, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता. शो करने के लिए कि यू आर नॉट यू आर नॉट इनफेमेबल, यू आर. अगर मैंने सही बोला है तो इसका मतलब कहने की बात ये दिखाना चाहते थे कि तुम जो है ना, तुम ऐसे नहीं हो कि जिनको ब्रीच नहीं किया जा सकता, तुम्हें ब्रीच किया जा सकता है. कहने का पॉइंट ये है जो हमास ने करके दिखाया इसराइल के अंदर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट,
उसके बाद क्या हुआ, हम ये सोच सकते हैं कि यार पैलेस्टाइन के लिए जो है ग्लोबली बहुत सपोर्ट आया है। यस, सिविलियंस के लिए, जो मासूम लोग मर रहे थे उनके लिए एक बिल्कुल सिंपैथी जो है आई है, एज इट शुड बी। दुनिया में कहीं जो है सिविलियंस मरे, इट्स रॉन्ग, और उसके लिए सिंपैथी आती भी है और लोगों की आती है, ठीक है, हर ह्यूमन, हर इंसान की जो है आती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब 26/11 के जब अटैक्स होते हैं, द फर्स्ट पर्सन to accept involvement of Pakistani state was your own ex prime minister नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया। हमने जी हमारा इन्वॉल्वमेंट था इसमें, ठीक है। उसके बाद ये रिट्रैक्ट किया गया स्टेटमेंट। उसके बाद जो वहां पे जो टेररिस्ट पकड़ा गया था, आपका जो है रिपोर्टर जो है उसके घर, उसके गांव तक पहुंच गया था। आपका एक बहुत प्रोमिनेंट, जिसके कनेक्शंस जो हैं बताए जाते हैं आपके आर्मी के साथ भी, वजाहत एस खान जिनका नाम है, उन्होंने जो है उन्होंने जो है उनकी डिस्कशंस हुई हैं, उनकी टॉक्स हुई है, उन्होंने कहा है कि कोई माने या ना माने, यस वी वर इन्वॉल्व, ठीक है। आईएसआई जो है वो इन्वॉल्व थी उसमें, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, इनडायरेक्टली जहाँ पे ये ट्रेन हुए हैं ये पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे, ठीक है। आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी थी तो उनके नॉलेज में जो है थी कि इनको ट्रेनिंग दी गई है। जो जो अमेरिका का भी जो अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने जो कहा है, वो चाहे ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी स्टेट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो भी जो है ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी ओरिजिन थे, और वहां पे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट भी जो है, बहुत कम ही लोगों को होगा कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। और मैसेज सिर्फ एक ही था कि टू शो कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करके दिखा सकते हैं। जब पहाड़ों के ऊपर जब आपके मुजाहिदीन चढ़े थे, ठीक है, जब कारगिल के अंदर, उसका मोटिव क्या था? क्या वो सच में तुम्हें लगता था कि वो पहाड़ों पे चढ़ के और कश्मीर कैप्चर कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो That ये was what they चीजें, thought was. ओके No, इफ यू थिंक सो। if you're asking about Kargil, my own family member, Brigadier Fazil Kareem Barki, was one of the brigadiers, one of the two brigadiers involved in that war. And yes, the army was very confident that they are going to cut off. And मरने से पहले तक ब्रिगेडियर बर्की जो था मुझे यही कहता था कि भाई अगर नवाज शरीफ जो था वो हरकत ना करता, वी हैव हैड a very huge chunk of Kashmir secured. And this is somebody who is my family member, who I अच्छा, have उसामा talked बिन to. लादेन को पाकिस्तान में रखने के पीछे क्या मोटिव था? साबित भी नहीं कर सकते हो क्या था, अमेरिका डैडी कहता तो कहता है, आई डू नॉट बिलीव इट पर्सनली, यार ये बट तो बात आ गई ना, बात इफ यू ये, वांट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन एवरीवन एल्स देन देयर इज नो मोटिव नो नो, और इट्स लाइक नॉट मीनिंग टू ब्लेमिंग, डिस्कस इसके अंदर इट। ब्लेमिंग क्या है? नहीं, उसामा बिन लादेन वाले मामले के अंदर तो ब्लेमिंग की कोई चीज नहीं है ना। इफ यू आस्किंग के भी मोटिव्स क्या थे, मैं आपको रफ मोटिव्स तो दे सकता हूँ। ओरिजिनल मोटिव के लिए सर आपको ओरिजिनल बंदों के पास ही जाना पड़ेगा। अब आप अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई बंदा जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर इंडिया, अगर ब्लेम गेम करनी है तो ब्लेम गेम तो फिर हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सारी इंसर्जेंसीज वगैरह होती हैं, एंड वी ऑल नो कि उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है, तो वो इंडिया से बंदे तो नहीं आते हैं। वो 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 आप वहाँ इतना पे, कॉन्फिडेंटली वो कैसे वहाँ बिलीव वो कर वहाँ लेते पे हैं कि उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर जो उनका है बेनिफिट है हमारा ना, जो है एक एजेंट जो है वो आपके बेनिफिट है। बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा था? पहली तो बात ये कि एक प्रूव हुआ है, ठीक है, एक वो भी आपने ही प्रूव प्रूव हुआ किया और आपने डिक्लेयर किया है कि हमने प्रूव कर दिया है। यार, इंडिया का नेवल ऑफिसर है ना, इतना तो मानते हो ना आप। तो कसाब आप अब मानते हो पाकिस्तानी था या नहीं मानते आप? हाँ जी, वो अपना फरीदकोट का कहा जाता है ना, तो ठीक है जी, फरीदकोट का था। अगर इंडिया बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ ट्रेन कर सकती है, तो इंडिया पाकिस्तान से
बंदे को जो सा बेवकूफ बना के वहां पे नहीं लेके जा सकती है, इट्स नॉट यार तो वेरी एक फार। सेकंड, मैं डिनाई नहीं कर रहा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ एक ना सेकंड यार। आदित्य, आई आदित्य डोंट बात थिंक सुनो, इट्स अ बात फार सुनो। फेच नोबडी आइडिया टू डिनाइड, एग्री टू बोथ नोबडी, दीज एक थिंग्स। सेकंड आदित्य, बात सुनो। Nobody denied कि Kasab was not from Pakistan, but just because he was from Pakistan does not mean the state was involved with him. आप तुम समझ रहे हो? कभी कभी लोग अपनी मर्जी से चले जाते हैं। और आपको लगता I है mean, ये even इतने in लोगों ने, Afghanistan जब जहाद वाला सीन था, not everyone was वो recruited by वो पर वो जो the ट्रेनिंग main. कैंप्स थे उसका, बट द पाकिस्तानी स्टेट न्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस ट्रेनिंग कैंप्स। You don't know that. You have no proof कि वहाँ पे यार पाकिस्तानी उन कम ऑन ट्रेनिंग यार, कैंप्स में लोग देन हुए देयर हैं। इज नो डिबेटिंग दिस आई नहीं थिंक। चलो ठीक है, नहीं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग कैंप से, चलो ठीक है, ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान के अंदर कई किस्म के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, Yeah, और वहां that's से a ट्रेनिंग different लेके thing. I'm going to cut to the chase of it a bit. The thing is, Aditya, देखो, किसी का पाकिस्तानी होना, that's perfectly fine. जिस तरह उसामा बिन लादेन की हम अगर बात करें तो वो सऊदी अरेबियन है, there is no doubt. But everything which Osama bin Laden did cannot be blamed on the Saudi state. इसी तरीके से आपकी स्टेट के अंदर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, दे आर इन पावर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन they carry certain kind of thing. But at the end of the day, the reality is कि इंडिया अभी तक ये बात इंटरनेशनल कोर्ट्स में कहीं पे भी ये नहीं साबित कर सका कि आईएसआई वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट। इवन जो कोर्ट केसेस सर्टेन टेररिस्ट लोगों के हुए ड्यू टू वेरियस रीजंस इन द यूएस, उनके अंदर भी जो वर्डिक्ट आए उनके अंदर भी they did not even mention that ISI was involved, or for that matter the Pakistani state in a direct or indirect manner. Stating कि वो पाकिस्तान से गए, I understand that, right? That is very much likely, and they were non-state actors. That much can be taken. अब उन्हों वो पहुंच कैसे गए, तो इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगर वो पहुंच गए तो आप ये क्या कहना चाह रहे हो कि that they were so articulate that they were able to deceive the entire Indian Navy, the ground forces when they reached there, the intelligence services, the bureaucracy, the communication, किस तरीके से that was even possible। वरना आम तौर पे जितना आजकल सिस्टम है आधार कार्ड का डिजिटाइज होने का, दूसरी चीज़ों का, इवन एन इंडियन और नॉन इंडियन, और स्पेशली जिस तरह पेमेंट मेथड्स हैं, they were all articulated, वो सारे तो वो दिखा रहे थे। तो why were they not able to figure this one out? आपको ये मानना पड़ेगा कि this can be a terrorist organization. They deceive both of the states in order to do it. More India than Pakistan. पाकिस्तान से तो उन्होंने बस लीगली निकलना ही था ना अपने वेपन्स को लेके। उनको मेजर प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही थी वो तो इंडिया पहुंच के हुई थी। तो how is this enough evidence? If this is enough evidence to say the Pakistani state was involved, तो अगर फिर कोई बंदा अच्छा, ऑपोजिट मैं इसका आके गए रिस्पॉन्ड तो करूं? हाँ हाँ, आखिरी बात सुन दो ना। इस तरह तो फिर सिड या कोई भी उसी सारे एविडेंस को यूज करके ये वर्डिक्ट अगर पास कर दे, या मैं भी कर दूं कि ये तो फिर इंडियन स्टेट की इनसाइड जॉब थी। do you understand? It has to work both ways. It makes no sense otherwise। फिर इस चीज को भी उतना ही मानना पड़ेगा। तो बोलो इसके हाँ ऊपर, देखें, that's it। तो देखिए, मैं आपको आर्ग्यूमेंट इसके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ। अगर आप ये चीज मानते हैं, यहाँ तक आप मानते हैं कि वो पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया आए थे, 10 लोग थे बाय द वे, ठीक है, और उनमें से एटलीस्ट एक जो है, जो आप एग्री करते हो कि वो पाकिस्तान में बॉर्न और ब्रॉट अप था, यहाँ तक अगर आप एग्री करते हो, और आप ये एग्री करते हो कि वो पाकिस्तान से रूट से आए थे, और आप ये कहते हो कि बट दैट डजंट मीन कि पाकिस्तानी स्टेट का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट था,
इट्स द सेम थिंग जब आप ये कहते हो कि जो है ना आपके क्वेटा के अंदर या जहां भी जो है एक इंडियन एक्स नेवी जो ऑफिसर पकड़ा गया था। अब मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिल्कुल वो ऑफिसर था, पर उसने जो है उसने जो है नेवी छोड़ी। उसके बाद में उसके दिल के अंदर जो है इंडिया के लिए कुछ कर गुजरने का आया। वो अपने रिसोर्सेज लेके जो है क्वेटा गया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने वो पैसे यूटिलाइज करके वहां पे अपने रिसोर्सेज बनाए, और वहां पे उसने जो है अपनी कुछ भी जो है टेररिस्ट है जो भी एक्टिविटीज है कैरी आउट कराई। बट इसमें इंडियन स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो पर्सनली जो है अपने गुडविल से या अपनी सोच से कर रहा था। इट्स द सेम आर्गुमेंट, इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय इट, नो प्रॉब्लम। Yeah, acha, I would like to highlight one thing here. Shaji, I would like to. So we've Ji. got a new speaker over here. I think he would like to add something. उसके बाद मैं तुम्हें respond करता हूँ. MR, MR. Amar, you have to unmute and then speak. Are you there? No, I think he is not. Or MR तो is not मैं here. एक आखिरी एक छोटा सा पॉइंट ये कह देता हूँ कि देखें, टेक्निकली अगर आप सोचते हो कि इंडियन स्टेट कैन टेक्निकली प्रूव कि यार उसके पास कोई ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड दिखा पाए या ऐसे कोई कॉल रिकॉर्डिंग दिखाया जाए जिससे जिसमें जो वो कसाब है वो आपके आईएसआई के हेड से फोन पे बात कर रहा है, तो शायद हाँ उस टेक्निकल टर्म्स पे तो हम नहीं जीत पाएंगे, हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। बट जैसे हमारा वो नेवी ऑफिसर को आप दुनिया के किसी कोर्ट में ले जाएं और आप एस्टेब्लिश करवा के दिखा दें कि वो डायरेक्टली इंडियन स्टेट से जो है ना वो इन्वॉल्व था, क्योंकि चाहे पाकिस्तान की आपकी आईएसआई हो चाहे इंडिया की रॉ हो, वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो डायरेक्टली आप कभी उनका इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर पाओगे। ठीक है, दे आर एटलीस्ट दिस स्मार्ट। ठीक है ना, कि वो ऐसे जो है ना वो ब्रेड क्रम्स तो नहीं तो तो, छोड़ेंगे रास्ते तो में फिर वर्ड कि उनका लाइकली डायरेक्टली यूज करना इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो चाहिए पाए। ना. दैट इज माय तो फिर अगर हम फैक्चुअल बात करें तो वर्ड likely is understandable, but then हाँ, तो India's आई एग्री, involvement or एग्री। in inside job in a parallel way is just as likely. अगर हम likelihood के ऊपर बात करेंगे तो फिर तो आप दोनों साइड का कह. जस्ट एज लाइकली क्या, किस चीज को जस्ट एज लाइकली कर रहे हो? Basically, what Shah is saying that uh, the word likely should be used here if something is not confirmed in terms of evidence. ये फुरकान भाई तो वही वाली आर्ग्यूमेंट है कि फिर 9/11 जो है वो अमेरिका की इनसाइड थी। मतलब ये Hmm. पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। मतलब कैन यू बी 100% श्योर कि वो जो है हाँ. जो वहां पे 9/11 जो था वो जो है ना वो ओसामा बिन लादेन ने नहीं करवाया था और इट वाज इनसाइड जॉब। तो Mhm. भाई आज आपको अमेरिका में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं क्या इनसाइड जॉब थी। बट व्हाट इज मोर अच्छा, मैं लाइकली? एक एक पॉइंट इधर रेज करना चाहूंगा क्योंकि देयर वाज ओनली वन सर्वाइविंग अटैकर जो कि कैप्चर किया था पुलिस ने, एंड दैट वाज अजमल कसाब। और उसके कन्फेशंस आर देयर, उसकी आई थिंक और वीडियोस ऐसा नहीं है भी उसको फुरकान सम भाई टाइम को पे 2-4 दिनों में निकली थी। लटका दिया गया जी था। जी 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 5-7 जी साल जी वो जी उसके जी जी भैया 7 साल 2012 तक उसे रखा 2012 है। नहीं नहीं 2012 में एग्जीक्यूट किया गया था, तो इट वाज 4 इयर्स। बट उसकी कुछ कन्फेशंस हैं और उसमें ही हैज नेम्ड सर्टेन पीपल, रूट्स बताए हैं कहाँ से आए, बट उसमें भी कोई स्टेट की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर सके थे इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपके इंडिया में जो उसके ऊपर पूरा ट्रायल चला है, एंड देन ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 2012। उसमें भी जो मेन फाइंडिंग्स थी, ही पॉइंटेड certain fingers at certain people, and बेसिकली कराची से आए, बोट में बैठ के आए, ऑल दिस जो है वो उसके कन्फेशन से निकला है। बट उधर भी कोर्ट ऑफ लॉ जो आपका जो उसका केस चला है उसमें स्टेट इन्वॉल्वमेंट वाज और नॉट फुरकान समथिंग भाई हो दैट वाज। सकता है उसे सच में नहीं पता हो कि यार वो कौन डायरेक्ट दे रहा था। ही वाज जस्ट अ मेयर, लाइक यू नो,
वो क्या कहते हैं, पपेट, या जो कहते हैं ना प्यादा जिसे कहते हो आप So चेस के that's अंदर। हाँ, he then was just a pawn in the game. Maybe even then he didn't knew the you have top people in the game. mm, He then was you just have to following the also, instructions. based on this argument, I think you also have to concede that what you are saying is conjecture at best. It's like डॉट्स ज्वाइन करके हम कह सकते हैं कि शायद ये हो हुआ हो। और ये पहले जो मैंने बात की थी कि जब भी इस तरह का अटैक पाकिस्तान में, आपने वो नेवी ऑफिसर के बारे में बात की, who was probably caught in बलूचिस्तान आई गेस। Yes. क्रॉस बॉर्डर हमारी कोलैबोरेशन नहीं चलती इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। और जब तक वो नहीं चलेगी ट्रांसपेरेंट, But तो Furkan bhai, do you think he was there by his own will? देखो दैट्स अगेन कंजेक्चर आदित्य। जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम उन फैक्ट्स पे अगर बात करें तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, और उस पे हम कुछ बात कर भी सकते हैं। अदरवाइज इट्स ऑल कंजेक्चर। हम बैठ के कहें कि ये किस तरह हुआ, वो किस तरह हुआ। बट एक चीज हमें फैक्टर इन करने की जरूरत है। जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है, uh, कुछ इंडिविजुअल्स उठ के तो अगर करेंगे, इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। जब इतना वेल प्लान्ड हो बाकी हो, तो यस, आईब्रोज आर रेज्ड, राइटली या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि बोथ साइड्स पे इस तरह के वेल प्लान्ड अटैक्स हो चुके हैं। बट वी आर इन नो पोजीशन टू पॉइंट फिंगर्स, क्योंकि एज यू सेड के उनको किस तरह पता होगा कि अगर वो इन्वॉल्वमेंट है, फॉर इंस्टेंस आपके किसी इदारे की, लॉ की या आईएसआई की, तो वो इस तरह लूज एंड्स नहीं छोड़ेंगे कि समथिंग कम्स बैक टू देम एंड हॉन्ट्स देम फॉर क्वाइट सम टाइम। और इंटरनेशनली भी आपको पता है इन चीजों को कैसे देखा जाता है। तो जी आदित्य। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अब ये वही वाली बात है, क्या पाकिस्तान में पिछले 20 सालों के अंदर जो है ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्ट किए हैं? मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग इन द 90s टू द 2010s, क्या जो है वहाँ पे आर्मी के अलावा जो है वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्ट किए हैं? आपके फैजल वराइज करके, या एक जो है आपका बहुत बड़ा यूट्यूबर है पाकिस्तान का, प्रोबेबली सुनो देखो जानो नाम से एक चैनल है उसका, प्रोबेबली ही इज द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल ऑफ आउट ऑफ पाकिस्तान। सिड इफ यू कैन कंफर्म, उसके शायद 2 या 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इट्स, हर किसी को ये चीज पता है। उसने कहा है कि मुझे जो है ये जो है आपके कश्मीर जिहाद के लिए अलकायदा वाले जो हैं, इवन आपके जिसका आपने नाम लिया था, मैं शिट मैं मेरे दिमाग से निकल रहा है, जो हाउस अरेस्ट में बताया गया था, कहते हैं ये चंदे मांगने आते हाफिज थे। सईद। हाफिज सईद, कहता है हाफिज सईद ने वहां खड़े होके वो कश्मीर जिहाद के लिए लोगों को बुलाता था, ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्ट करते थे। उसने यहाँ तक कहा है कि मैंने वो ट्रेनिंग कैंप्स देखे में, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर जिहाद के लिए ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, बियॉन्ड अ लाइक इवन अ डाउट। ठीक है, कि जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्ट करते थे, कोई डिनाई नहीं करता। ठीक है, आपको पाकिस्तान का नहीं, सबसे अच्छा बड़ा आदित्य, यूट्यूबर कहता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आदित्य, मामला फिर पता है क्या बनता है? अगर तो कश्मीरी जिहाद की आप बात करते बताएं हैं, बताएं। why would we first of all deny them? Secondly, why would we be ashamed of them? आई एम नॉट Do इवन you think आस्किंग यू टू हम बी ये, ashamed ऑफ इट, आई एम जस्ट लेकिन यहाँ स्टेटिंग। क्वेश्चन ये बनता है कि कश्मीरी जिहाद के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सैयद सलाहुद्दीन वगैरह, उनको मुंबई में अटैक करके क्या मिलेगा? अब आप अब आप मैं आपको इट समझाता हूँ इस मेक्स नो चीज को। सेंस। देखें देखें, अगर आपके पास जिहादी जो है ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं ना, अगर ये चीज हम सब एग्री करते हैं, हाँ ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हुआ करते थे, दैट मीन्स देयर वाज अ पैरेलल military being trained in your country. You agree to that, right, Sid? अच्छा, तो फिर उससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इससे कंक्लूजन में ये निकालना चाहता हूँ कि अब आप चाहे डिनाई कर सकते हैं ये चीज कि पाकिस्तानी स्टेट को नहीं पता था कि हाफिज सईद और वो लोग क्या कर रहे थे वहां पे, या जो है ये अजमल कसाब कहाँ कौन से कैंप के अंदर था, वो किस किस जिहाद के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। कहने का मेरा मोटा मोटा बात ये है कि देयर वाज अ पैरेलल गवर्नमेंट
in a way, a very minute kind of government. Army existed in Pakistan. They were taking अरे भाई, decisions and making decisions by their own thinking. अगर ठीक है, तो and ये they implemented these Sid, let me actions. respond. Sid, please, अगर तो please, ये let me respond. Sid, let me respond. I think Aditya saying it as a parallel government, it is a stretch. Yeah, I think it's a Americans, stretch, but it was a parallel Aditya, army at least. let me complete. No, no, not even a parallel army. Uh, I think the Americans knew of it for quite some time. They rather probably helped in a way in a decade back, probably to establish such establishments. I would say, or a lot of other countries also knew what was happening in Pakistan on these grounds, and those were used as hatcheries for such uh, आप कह लें कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो कि जिन्हें वो प्रॉक्सी वॉर में यूज करेंगे और ये इट्स अ फैक्ट वी कांट डिनाई ना हम डिनाई कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनली भी अ लॉट ऑफ पीपल न्यू एंड देन पाकिस्तान टू स्टैंड भाई ये खत्म करना है क्योंकि हमने भी वो चीजें फेस की यही रोग एलिमेंट्स हमें हमें भी आके लड़े हैं ठीक है दे ऑल्सो बिट अस here and there तो 60-70,000 सिविलियन लाइफ्स लॉस्ट हुई थी और वो इन्हीं ब्रीडिंग ग्राउंड्स के हैच्ड ब्लैक शीप्स थी तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता पर स्टेट की कितनी इन्वॉल्वमेंट है दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क और वो एग्जिस्ट कर रही थी आई थिंक इट्स अ नोन फैक्ट इंटरनेशनली उसके मेरा अलावा कहने फुरकान का भाई, यहाँ पे आप अगर स्टेट की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं ना, तो कितनी फनी बात है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर, अगर स्टेट इन्वॉल्व होता है, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अगर 2 दिन बाद आके कहता है कि भाई सॉरी हमसे अटैक हो गया, पहले खुद साइन करता है फिर कहता है सॉरी। और द हिस्ट्री ऑफ Nawaz Sharif with Kargil and with the nuclear bombs and the whole shenanigans with India uh, loses his credibility a lot in these scenarios. Uh, एक प्राइम ये तो इस तरह ही है कि मैं किसी को चपेड़ मार के फिर बोलूं कि सॉरी भाई, ये मुझसे गलती से चपेड़ लग No, गई थी। Sid, that's very unfair analysis, I would say. A three-time head of state रहा वो बंदा मेन फिगर आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तीन चार देखें तो टॉप 1 2 3 में आता है वो बंदा उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो बहुत सीरियसली ली जाएगी और उस पे जो भी हम इस तरह की गुफ्तगू कर लें आई डोंट थिंक सो उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू कम हो सकती है चाहे नहीं, वो इसके रिट्रैक्ट भी अंदर कर जो जाए प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी पूरी स्टेटमेंट देखें और बाद में उसका रिट्रैक्शन भी देखें एंड द वे इट वाज मैनिपुलेटेड इन अ वे इज अनडिनाएबल। उसने पाकिस्तान के अंदर से स्टेट को अलग करके एक्टिविटी को एक्नॉलेज किया था in terms of के लश्कर तैयबा and he was being asked a question about FATF by an international newspaper. I think it happened to be Guardian at the time and the other media was there as well. और जब उससे क्वेश्चन हुआ था तो उसने उससे क्वेश्चन किया जा रहा था ऑफ वेरियस टेररिस्ट आउटफिट्स अराउंड एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान इन वेरियस पार्ट्स। तो नवाज शरीफ ने उसका जवाब क्या दिया था कि ही बेसिकली सेड कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मुंबई अटैक्स के अंदर लश्कर तैयबा का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के थ्रू था। ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेड। ही डिड नॉट से दैट द स्टेट बेसिकली डिड दैट। It was manipulated as such by a few media houses, but Nawaz Sharif went out and corrected. नॉट ओनली दैट, अगर आप वो पूरे इंटरव्यूज को देखते हैं और वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इट्स यू वोंट मेक अ मिस्टेक कि उसने ये कहा था कि पाकिस्तानी स्टेट या आईएसआई ने वो कैरी आउट किया है। सो दैट वाज नॉट अ रिट्रैक्शन। When certain media houses attacked Nawaz Sharif, he went and tried to clarify to them कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू कर रहा था और वो किस गुफ्तगू में किस तरीके से वो स्टेटमेंट आई है। Even though I'm not a supporter of Nawaz Sharif, I hate him to bits in regards to the kind of politics he's done.
But you have to be fair when you make these statements. उसने ना ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था कभी, ना ये इस तरह की एक्सेप्टेंस आई है। और मेरा फिर यही पॉइंट होगा कि ये इमोशनल बात है। आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ सब्जेक्ट लाइक दैट जब आप एक टेरर अटैक देखते हो, but it is just India's word against Pakistan's word at this stage। ठीक है ना, ग्लोबली वो साबित कर सके हैं। जिस तरह आदित्य, खाली एक प्रूफ नहीं होता कि कितनी ज्यादा कंट्रीज हैं वो ओवर अ टाइम पीरियड क्लेम भी करती हैं, एक्सेप्ट भी करती हैं। देयर वर लाइक रशियन एजेंट्स जिन्होंने जिनको रशिया ने आके इंग्लैंड के अंदर मारा, यूके में मारा, बट देन रशिया एडमिटेड टू as well that it occurred। सो ये रिसेंट पास की बातें हैं जिनके अंदर आपको पता लग जाता है where certain states have enough evidence that what they carried out in terms of an activity was proven। तो इसके अंदर हम जिस तरीके से भी देखें, पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है इस चीज के अंदर। इट्स actually if Pakistani, what the role of the Pakistani state was or what the Indian state role in that regards was, किसी के पास फाइनल वर्डिक्ट अभी तक भी नहीं। And that's just how it is। But Shah, in the initial statement, he also pointed a finger at the slow लीगल प्रोसीडिंग्स जो कि हो रही थी, जो नेम्ड इसके अंदर जो इंडिया की साइड से नेम किए गए थे कि ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। That was one of the points that he raised in his initial statement, जिसपे सारा ये Yes, so बात है what's शायद। wrong with that? But how does that change it? Doesn't change anything, but it Hmm. indicates that he was pointing a finger at the India, legal system और वो yeah। इतना sluggish क्यों है in Pakistan, in Pakistan, in नहीं, Pakistan जो इन पे ट्रायल चल रहा था। पाकिस्तान का भी अगर वो कर रहा था, लेकिन वो पाकिस्तानी स्टेट को नहीं कह रहा था। इट वाज टॉकिंग अबाउट अ मैन्यूवरमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑपरेट्स इन पाकिस्तान व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। एंड इवन पाकिस्तान पुट्स हाफिज सईद अंडर हाउस अरेस्ट। यहाँ पे बात तो ये है, उसने ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तानी स्टेट जो है उसने स्पॉन्सर कर दिया है और जाके टेरर अटैक कर दिए हैं। He never made that statement। Yeah, that wasn't even claimed, but जो point था कि like he pointed a No, finger no, a at lot of in a subtle Indians way, make in a that very subtle way statement। कि जो यार, ट्रायल चल रहा है वो क्यों नहीं हो रहा, और फरहान उसने भाई, सेकंड स्टेटमेंट में मेरी फिर मेरी कहा कि मैं ट्रायल की बात कर रहा था। देखें, trial is another aspect। This point is like raised time and again by a lot of Indians, a lot of people, कि नवाज शरीफ ने एडमिट किया था। नवाज शरीफ ने स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कभी ना बोली, ना कही, ना उस कॉन्टेक्स्ट में कही। हाँ, it was tried to be molded in that way, but that's I not what agree. he said। That's the main He point। he categorically said that non-state actors were involved. He was very categorical in saying that. But yeah, trial की बात की थी। I think Shah Medusa, we should wrap the session up. It was a brief session. We should go towards the final statements. I'll go directly to Aditya. Aditya, if you would unmute and give your closing remarks, please. uh Closing remarks are that 2611, like I don't think, like most Indians even care about what Pakistanis believe or think about who carried out the 2611 attacks. Most Indians don't. The only thing they think about when it comes to 2611 is that uh, that I think for a lot of Indians, the argument comes that India has tried to extend a hand for peace and friendship for a very long time. Pakistan has always betrayed that gesture, and 2611 was
was the last time India looked at Pakistan, hopefully for friendship. And a lot of Indians after that started arguing that is it even a good idea to be trying to have cordial relationships with Pakistan. That was a, like, people will argue that was a changing point, from where a lot of Indians would started to argue that even if we want to have a cordial relationship with Pakistan or not, and a lot of people would argue that we shouldn't. And uh, that's my closing statement about it. And it's 2611 is looked at as that India being weak in front of Pakistan, and that's why this happened to us. And the only way ahead of this is by becoming a stronger power and becoming not a match for Pakistan that Pakistan can bully. So that's my closing statement. Thank you. Thank you, Aditya. I'll give my closing statement. It would be very simple. I hope such acts don't happen in the future. And अगर कभी हो तो bilateral collaboration इतनी हो कि investigation पूरी हद तक मुकम्मल हो सके and some conclusions can be drawn. जो trial है इनके वो जरा expedite किए जाए क्योंकि if जो involved हैं they are still running free on the street or allegedly involved, I would say. तो एटलीस्ट द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड और जो ट्रायल है वो एक्सपेडाइट किया जाए बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर मेरा ख्याल है दिस शुड बी डन क्योंकि हम दोनों साइड से जो इस तरह का कभी इवेंट होता है जो हम रिएक्शन देखते हैं इट्स इट्स कंप्लीट डिनायल इनिशियली and then cover up and not helping in the investigation process, rather hindering in the investigation process. So I hope sense prevails on the both sides. Said, I would actually carry on with build up my closing statements with what Aditya said. The resultant of 2611 was the public perception of India became hostile towards Pakistan, and after that, what kind of government did form in India? They had a lot of their votes centered around anti-Pakistan sentiment, and it was a right-winger government. So, I mean, what happened? The people who benefited from it, in my view, if we connect the dots, even though it's not a proper proof, uh, I mean, I would not be. It would not be right for me to give, uh, sentence about it. But uh, it never made sense to me, even back then, that what organization will have what benefit from it. The proof is in the pudding, I guess. What Aditya said did happen. The resultants of them did happen. We are looking at them right now. And, well, I guess I'll let the people point fingers out if they can understand about it. yeah, over to you, Shaji. Okay, thank you very much. So I would like to just keep it short. I think a lot of emotions are at play जब भी इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में बात होती है पाकिस्तानी और इंडियंस के बीच में. But at the end of the day, above that Jangoism, ke everything is India's fault or everything is Pakistan's fault, we have to like look at it objectively. और अगर फॉर एग्जांपल आप ये एक दूसरे पे बस ब्लेम कर देंगे विदाउट प्रूफ यू माइट बी एबल टू गेट अवे विद इट इन योर ओन कंट्री बट टू एक्सपेक्ट के इंटरनेशनली उसकी कोई एक्सेप्टेंस होगी और व्हेन यू from your respective countries come across each other
वहाँ पे कोई चीज़ जो प्रूवन नहीं है उसके ऊपर वो पाकिस्तानी मान जाएगा. So we have no reason in Pakistan's case, and I'm sure on India's case as well, to accept anything which our state is accused of. Um, uh, uh, if it's not proven, अगर prove हो जाएगा तो हम भी accept कर लेंगे. दूसरी बात ये है कि that is not something which our state has stated. They've denied it. So obviously, we'll go by the word of our state. Like, yeah, I'm sure most of the Indians would go by the word of their state, unless proven in international bodies or something. As far as the actual terrorist attack was concerned, no doubt that has to be condemned. Those who carried it out, they did a disgraceful job, and obviously we're never going to condone that. Majority of Pakistanis don't condone that. Majority of people around the globe are not going to condone that. A terror attack is a terror attack. Uh, but to expect another country's people to take responsibility for something which you're accusing them of, no, it's not going to happen till it's proven and it's black and white. And unfortunately, it's not black and white, it's a gray area. So thank you very much. Maham Shah, would you like just close and I'm just going to give my last statement. It's this that देखो, uh, it first of all it was a bad thing. Okay, I condemn it. Nobody should face such things, right? All those innocent civilian, हमारी फौजें आपस में लड़ती रहे, लेकिन normal Indian civilian, normal Pakistani civilian do not deserve that. My point is कि देखो, we can say that India does not, मतलब Aditya said that India do not want to be friends with वो anymore, Pakistani anymore. But we can say the same thing. Like there have been multiple cases, Balochistan, the Aman ki Asha case. ठीक है, we can say that as well. But you cannot pick just one event and say that about, I don't know, a community of millions of people are responsible for it, right? I mean, just take this as an example. अगर for example अगर पाकिस्तानी state ने for example वो किया भी है, ठीक है, तो वो it was a mindset of one general or one prime minister. ठीक है, हम जो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है, हमारा कोई 100 years का प्लान नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का होता है, एंड दे कैन नॉट गो हियर एंड देयर फ्रॉम दैट. ठीक है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं होता, हमारे ऐसे मिनट्स पे प्लान्स चेंज होते हैं. सो इफ वन प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट बिहेव नाइसली एंड डिड समथिंग स्टूपिड, दैट डज नॉट मीन कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, एंड द होल पाकिस्तान स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एंड देयर इज नो वे बैक फ्रॉम इट. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे वाजपेयी एंड मोदी बोथ आर members of BJP, right? But Vajpayee is considered as a really good guy. ठीक है, my mom is a big Vajpayee fan. ठीक है, but at the same time every Muslim hates Modi. ठीक है, अब मैं just because Modi is part of BJP doesn't mean I will say that नहीं वाजपेयी भी बड़ा बुरा बंदा है. So that's all I had to say. I think we're done for today. Thank you for listening, everyone, and thank you for to all the speakers. And subscribe to the channel on YouTube, and press the bell button so that you can get regular update of Thank our you. sessions. Thank you, and Allah Hafiz. Goodbye.